Hey guys, welcome back to my channel Lifesciences with Aces. If you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's session is all about citric acid. The citric acid is a topic from food microbiology. So let's proceed about the introduction part. ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन बाय माइक्रोब्स इज इम्पोर्टेंट इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन होता है कोई भी एसिड हो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जैसे हमारा है साइट्रिक एसिड फ्यूमरिक एसिड लैक्टिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ये सब प्रोड्यूस होता है हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यही पढ़ाया जाता है एंड मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ these आर द मेजर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन. And before the development of microbial process of citric acid production, the major source was citrus fruit. तो citric acid किससे प्रोड्यूस होता है जो हमारा citrus फ्रूट होता है जैसे कि हमारा ऑरेंज हो लेमन हो वो उससे citric acid प्रोडक्शन होता था. And today अभी क्या हो रहा है most of the commercial citric acid is obtained by microbial process. Out of all citric acid produced by microbes, 70% is used in food and beverage industry, 20% in pharmaceutical industry, 10% and 10% in other industrial application और जो भी कुछ होते हैं वो 10% के लगभग यूज होते हैं. तो इसका एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियली ये यूज होते हैं. तो एग्जैक्टली ये किस किस जगह पे यूज होते हैं. सो लेट्स सी इट एक्ट एज एसिडुलेंट. एसिडुलेंट क्या होता है दैट रिड्यूसेस द पीएच एंड चांसेस ऑफ कंटामिनेशन इन फूड. तो इट एक्ट एज एसिडुलेंट इन फूड. जो भी हमारा है वो खाना जो भी हम रखते हैं उसका पीएच वो रिड्यूस कर देता है और पीएच रिड्यूस करने में एसिडिक एनवायरनमेंट में कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो होने में दिक्कत होते हैं. तो ये दिस एक्ट एज एसिडुलेंट and it acts as a chelating and sequestering agent in particularly leather industry. leather industry में भी citric acid यूज होता है एंड सॉफ्टनिंग ऑफ लेदर अभी मैं बताई लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है और ये इसका सब पॉइंट है. तो सॉफ्टनिंग ऑफ लेदर एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस प्रोड्यूस होता है लाइक योर ड्रिंक्स. तो उसमें योर स्प्राइट वगैरह जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें ये यूज होता है. And citrate ester and plasticizer gives plasticizer क्या होता है ये प्लास्टिक को एक पर्टिकुलर शेप देता है जो उसका शेप में आता है. And citric acid can be produced by surface culture and submerged culture process. Out of these two process, surface culture process is mostly employed in production of citric acid. Here CT is the abbreviated form of citric acid. सो ये कैसे प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड. तो इधर योर सरफेस कल्चर और योर सबमर्ज कल्चर प्रोसेस दो टाइप के कल्चर प्रोसेस हैं इसकी सरफेस कल्चर और सबमर्ज कल्चर. एंड ये सब में से सरफेस कल्चर टेक्निक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसमें एक हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है एस्परजिलस नाइगर. इट इज अ फंगस. एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगस इज वाइडली यूज्ड बाय यूजिंग द सरफेस कल्चर मेथड. सरफेस कल्चर में जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो फंगस कह सकते हैं वो यूज होता है वो क्या है एस्परजिलस नाइगर. As the name indicates, the culture inoculated across the surface of production media. Thus, it remains in culture throughout the fermentation process. पहले से लेके अंत तक ये Aspergillus niger present रहता है for citric acid production. And important bioparameters during the citric acid production are पहले क्या हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म. पहले हम ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं कोई ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करके फिर हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ सुइटेबल फंगल स्ट्रेन for production of citric acid. It has already been reported that many fungi possesses the ability to produce citric acid. तो ये सारे फंगी है जो हमारा साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. तो इसमें आता है हमारा एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस क्लेवेटिस P. luteum, P means penicillium here, penicillin citrinium, Eustillina vulgaris, Paeocelomyces and Abeticulum
Out of all Aspergillus niger, it is the predominant fungi. This Aspergillus niger is the predominant fungi used for industrial citric acid production. Because of its high efficiency, जो भी कुछ फंगस हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ पे देख सकते हैं, Aspergillus niger एक ऐसा है, वो प्रीडोमिनेंट फंगी है क्योंकि वो हाई एफिशिएंसी देता है सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाता है. And it produces a small amount of oxalic acid that maintain the pH and salt, which provides a better condition for fermentation. And it is easily cultivable. ये Aspergillus niger जो है वो easily cultivate हो पाता है lab condition में या फिर हमारा industrial process में. And unidirectional process for production of uniform biochemical process, ये एक unidirectional process है जो कि हमारा यूनिफॉर्म बायोकेमिकल प्रोसेस से लेकर सब शुरू होता है. और बायोकेमिकल प्रोसेस इसमें क्या है, चलो देखते हैं. दिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन. सो व्हाट रॉ मटेरियल्स वी नीड. शुगर को हम किस फॉर्म में लेंगे, ग्लूकोज. ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, योर पायरुविक एसिड. एंड पायरुविक एसिड से बन जाएगा एसिटल कोएंजाइम ए. फिर टीसीए साइकिल से जाकर एंजाइम साइट्रेट सिंथेज जो है वो प्रोडक्शन कराएगा साइट्रेट. एंड साइट्रेट जो है वो आकोटिनेज की मदद से कराएगा आइसोसाइट्रेट. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन. You should remember this one. And this will fetch you more marks also. And high substrate concentration increases the production of citric acid in glycolytic and TCA cycle at the substrate concentration, and the activity of citrate synthesis increases simultaneously reduces the activity acotinase and isocitrate dehydrogenase, thereby producing citric acid. तो ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल इंग्लिश में लिखा है. फिर प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम. इनोकुलम हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ऑफ एस्परजिलस नाइजर स्ट्रेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सरफेस कल्चर मीडियम, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं चलो पहले देख लेते हैं. इसमें आता है स्टॉक कल्चर. स्टॉक कल्चर को लेके जो हम पुराने कल्चर करके रखे हुए होंगे वो स्टॉक कल्चर बोला जाता है. स्टॉक कल्चर से लेके देन हम इनोकुलेट करेंगे, एक सॉलिड स्पोरुलेशन मीडियम बनाएंगे, उसमें वो इनोकुलेट करेंगे, इनोकुलेटेड सॉलिड स्पोरुलेशन मीडियम. देन इंक्यूबेट, हम इंक्यूबेटर में रखेंगे और टेम्परेचर रेंज सेट करेंगे 28 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 14 डेज, उसको मेंटेन करके रखेंगे इंक्यूबेटर में. एंड फॉर स्पोर प्रोडक्शन अनफेयर मिनिमम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी बैलेंस इन इनोकुलेटेड मीडियम. सॉल्ट कंसंट्रेशन जो उसमें होता है उसे बैलेंस करके रखेंगे ताकि हमारा योर कल्चर ठीक से हो, एस्परजिलस नाइगर का कल्चर ठीक से हो. Then suspension of spore is obtained by suspending or mixing it grown spores in suitable diluent waste. And your the suitable diluent water, this is sorry. एंड फिर कार्बन सोर्स को हम देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू लास्ट स्टडी सुक्रोज इज द बेस्ट कार्बन सोर्स अमंग वेरियस सोर्सेज. सुक्रोज जो है वो बहुत सारी चीज़ों में जो हम प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोसेस जो होते हैं और जो हम प्रोडक्शन करते हैं, सुक्रोज को हम बेस्ट कार्बन सोर्स माना गया है उसमें. And sucrose concentration within 15% gives satisfactory yield of organism, and more than 15% fungus can sustain. If this will be more than 15%, then fungus can't sustain, and if that will be less than 15%, then TCA cycle will continue. And see here, if TCA cycle will continue, citrate will be formed. Then what happen here? Beet molasses as a source of carbon is used extensively for production of citric acid, as beet molasses contain excessive amount of trace materials like your potassium, phosphorus, sulfur, magnesium, etc. So it require pre-treatment. हम यहाँ पे beet molasses को ले सकते हैं because जो बीट मोलासेस होते हैं ये इन मटेरियल को बहुत ही अमाउंट में कंटेन करता है. एंड बी मोलासेस एंड प्री ट्रीटमेंट विद फेरोसियानाइड और फेरिसियानाइड प्रेसिपिटेट द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ट्रेस मेटल रिक्वायर्ड फॉर साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन. सो इसमें कंपोजिशन ऑफ मीडिया क्या रहता है. मीडियम हम जो लेते हैं उसमें सुक्रोज रहता है 125 to 150 ग्राम पर लीटर. एंड एमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो रहता है 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर.
and potassium dihydrogen phosphate, which is your 2H2PO4, that is remain in 75 to 21, and magnesium sulfate in aqueous present in 0.2 to 0.25, and your pH should be maintained at 3.4 to 3.5 pH. हमारा acidic pH इसमें बहुत ही necessary है, and this composition is developed by A.C. Curie in 1917, and after that modified media came, and this modified medium was developed by Dogler and Prescott. So ये इन्होंने बनाया था हमारा modified media. तो मॉडिफाई मीडिया में क्या है, सुक्रोज कितना लेते हैं हमारा 140 ग्राम पर लीटर, और इसमें कितना था सी 125 टू 150 ग्राम पर लीटर, और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 2.2 टू 2.3 ग्राम पर लीटर, और यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट था 2 टू 2.5 ग्राम पर लीटर. सो डाई पोटासियम हाइड्रोजन जिसमें और ये चेंजेस आया है, ये डाई पोटासियम हाइड्रोजन जो है वो 0.1 कंसेंट्रेशन में है, और मैग्नीशियम सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन जो है ये इसमें था 0.2 to 0.25, and in modified media it is present in 0.23 amount, and pH is very acidic here, it is the pH is 1.6 to 2.2, but in your media, your primitive media, that was pH was 3.4 to 3.5, and ये डेवलप किया गया था डॉगलर एंड प्रेस्कॉट in 1934. And it is highly essential to add ammonium nitrate in minimum quantity only. More than that, record the concentration. If you add more than this, then the record concentration will affect the entire fermentation process adversely. हमारा acetic acid का production सही से नहीं होगा. And the concentration of inorganic salt and metallic salt depend on the type of fungal strain. जो हमारा फंगल स्ट्रेन होता है, फॉर एग्जाम्पल सी इफ वी सिलेक्ट aspergillus niger strain 62, then it requires 0.1 mg of iron per liter of media, and strain 59 requirement of iron is your 10 mg per liter, and pH stated by Curie is 3.4 to 3.5 is by Dogler. And see why here once your question arises why the pH is acidic here, why we can't perform your experiment or your production process in basic medium, because this acid favors the growth of fungi and reduces the growth of bacteria. जब हमारा pH थोड़ा बढ़ा देंगे, वो न्यूट्रल पे आ जाएगा या फिर थोड़ा बहुत बेसिक में आ जाएगा, तभी हमारा बैक्टीरिया का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, एंड इट फेवर्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड. हमारा सिट्रिक एसिड की जगह ऑक्जेलिक एसिड प्रोडक्शन हो जाएगा. फिर फर्मेंटेटर के बाद देख लेते हैं कैसे हम फर्मेंटेटर लेंगे. इट शुड बी मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील इन ऑर्डर टू रिड्यूस corrosion at acidic pH, otherwise the iron liberated will hamper the fermentation process. सी अगर स्टेनलेस स्टील नहीं लेंगे और कुछ मेटेरियल के लेंगे तो corrosion हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन प्रोडक्शन होता है, आयरन प्रोडक्शन होने में वो corrosion करवा देता है, एंड फिर pH भी एसिडिक रहता है. Then see about temperature. This temperature will be maintained at 26 to 28 degrees Celsius, and it usually depend on the type of strain. को strain के हिसाब से हम temperature को set करेंगे. And फिर आता है हमारा ratio to volume surface area. तो रेशियो टू वॉल्यूम सरफेस एरिया हम कैसे लेंगे, बायो कन्वर्सन ऑफ सुगर टू साइट्रिक एसिड डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मीडिया, दैट इज द सरफेस एरिया. लोअर द रेशियो higher the production of citric acid, and this ratio gives rise to low or high surface area. If it is 2.5 ml per square centimeter, then the yield of citric acid will be 4%, and if it is 1.2 ml per square centimeter, then yield will be 4.91. So aeration, how much air should be provided through your sparger? Optimum air supplied for fermentation period. फॉर्मेंटेशन पीरियड जब तक चालू है तब हम अच्छे से एयर सप्लाई करेंगे. एंड अबाउट द यील्ड 60 to 80 ग्राम ऑफ CA per 100 ग्राम incorporated sugar, and maximum yield will be 90.7 gram of CA, and it is experimentally performed by Wells et al. 1935. Wells did this experiment in 1935.
Then recovery of Ca from harvested fermented liquor or broth is difficult due to presence of unconverted sugar and oxalic acid and presence of trace salt as impurities. And fermented liquor is drained off to separate the mycelium in addition to any intracellular citric acid present in micellar obtaining by pressing the micellar mat. So this is all about today's section, the production of citric acid. If you have any doubt in this portion, then you can say me in comment section. I will help you in your every doubt. And if you have any doubt in other section of your life sciences, you can comment me down. I will make a video of that also. So this is all about today. Thank you. Have a nice day.